Assalamualaikum all dear students, I hope you all are doing very well. So today I have a very important update for all the students, and many students were saying that I should make a video on Msc examination 2023 part 1 compartment and part 2 annual. So let me tell you one thing, that university will conduct your exam very soon, so you don't have enough time to prepare yourself for the final exam. If you want to prepare for the final exam, then you should start your preparation right now. So join now. I have provided my contact number right here, you may contact me. And the second thing is that you have a very minimum time, and you don't have enough time to prepare yourself. You may say that many students are saying the university will conduct the exam in August. No, it's a fake news. University will conduct your exam in the coming month after August. It means that university will conduct the exam in at the start of September, or it may be the end of September. So date sheet will be uploaded after 1 month on the YouTube or on the FB page of Punjab University, or on the official website. So if you want to appear in the coming examination, then your preparation should be excellent and you should prepare very well for the coming exam. I have provided my contact number right here, so if you are interested in joining my smart session, you may contact me. And if you have any query regarding your exam date, you may contact me again. पंजाब यूनिवर्सिटी सिंपली मैं आपको बता देती हूँ उर्दू में कि पंजाब यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स कंडक्ट करने जा रही है, और बच्चे काफ़ी सारे कह रहे हैं कि मैम ये तो अगस्त में स्टार्ट हो रहे हैं. नो वे. यूनिवर्सिटी जो है आपके एग्ज़ाम लेगी स्टार्ट ऑफ सितंबर और एंड ऑफ सितंबर. सो यू हैव इनफ टाइम टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द फाइनल एग्ज़ाम. लेकिन एक दिन कीमती है, दिन रात मेहनत करेंगे तो ये इतना टाइम अब आपके पास रह गया है. यू हैव टू डू हार्ड वर्क बाय डे एंड बाय नाइट, तो तभी आप इसमें सक्सेसफुल होंगे, अदरवाइज़ आप फेल हो जाएंगे. और कंपार्ट आ गई तो फिर ये कंपार्ट क्लियर नहीं होगी आपकी. इसलिए इतनी अच्छी तैयारी बुक्स, मैंने आपको पहले कहा है कि आप लोग गाइडेड मटेरियल, गाइड बुक यूज़ ना करें. गाइडेड मटेरियल वालों को फेल कर दिया जाएगा, क्योंकि वही पुराना सड़ा हुआ सिस्टम, HEC कह रही है कि पुराना सड़ा हुआ सिस्टम है, हम इसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे. लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ भी इस चीज़ पर स्टिक हो चुकी हैं, और वो कहते हैं कि नहीं, अब हम भी स्ट्रिक्ट मार्किंग करेंगे ताकि मैक्सिमम बच्चे फ़ेल हों, ताकि दोबारा सप्ली में दाखिला लें, और सप्ली में जब दाखिला लें तो दोबारा फीसें दें. ठीक है, इसलिए आपने यूनिवर्सिटी को ज़रा सा भी चांस नहीं देना, कोई भी किसी क्वेश्चन में ज़रा सा भी लैक नहीं छोड़ना कि आपको फ़ेल कर दें. आपकी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से भी आपको इस बार यूनिवर्सिटी फ़ेल कर सकती है, क्योंकि ये लास्ट चांस है प्राइवेट MA का. और एक और चीज़ मैं बता दूँ, जो प्राइवेट अप्लाई करना चाह रहे हैं, अभी MA करना चाह रहे हैं मज़ीद, तो सरगोदा यूनिवर्सिटी के एडमिशन्स के हवाले से मैंने एक वीडियो डाली हुई है अपने यूट्यूब चैनल पे. मुझे आपको वो स्क्रीन पे शो करनी पड़ेगी, मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देती हूँ. आप यहाँ पर आएँ मेरे चैनल पे, आपको यहाँ पर एक वीडियो मिल जाएगी, फर्स्ट द वेरी फर्स्ट वीडियो. अब इस वीडियो के अपलोड करने के बाद ये सेकंड वीडियो हो जाएगी. गुड न्यूज़ फॉर MSc सरगोदा यूनिवर्सिटी फ्रेश एडमिशन अपीयर एज अ फ्रेश कैंडिडेट. और आगे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, यानी आप सरगोदा यूनिवर्सिटी की जानिब से फ्रेश एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो इसलिए अपनी तैयारी एक्सेलेंट रखें. और ये सरगोदा यूनिवर्सिटी का जो नोटिफिकेशन है, इसमें कहा है कि एग्ज़ाम्स आपके अक्टूबर में लिए जाएंगे, एडमिशन आपके सितंबर में जाने शुरू हो जाएंगे. सो बी रेडी फॉर इट. मेरा कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर है. कुछ पूछना है, कोई क्वेश्चन है तो मुझसे रब्ता कर लें. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. अल्लाह हाफिज़.